Sir, how are you? Welcome Good, to sir. Zypp. Finally. क्या हाल चाल? Very हाँ? nice, very nice. Sorry to keep you waiting यार. No, it's okay. This for you. क्या बात कर रहे हैं? ये सब क्या है भाई? हैं? This is तुम a यहाँ आए हो small मतलब? token अरे, I totally appreciate यार. Clear देखो के चश्मे इतने सारे. for everyone. Come, lovely यार. आज. Thank you. Nice warm office. हैं? A lot of energy. I Lot can of feel it energy, already. yeah. This is something that I love hearing Yeah, from yeah. everyone. हाँ. This is a consistent. कि everyone says यार energy कुछ अलग ही आ जाती है Energy, लोगों को. yeah. Even investors when they come Yeah, in, whether they invest or not. Great, yeah. So today I have a friend, again, more than a founder on my show, the Founders Show, powered by Zypp Electric, presented by Kaash से Akash, right? This founder के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 5 साल पहले मैं इनसे मिला था और ये जैसे कॉलेज में नहीं होता कि एक के बाद एक डिबेट में जा रहे हैं, तो आई वेंट एंड देन इट वाज हिज सेशन. वी वर पिचिंग टू इन्वेस्टर्स in a room in Delhi, and then we together met in maybe Surat or Lucknow also, where we were both pitching to investors for our own startup. And the interesting part about him is that इनकी पूरी पिच हिंदी में थी, right? तो हम लोग बाकी सब इंग्लिश में पिच करके आ रहे हैं, ये हिंदी में जनाब बिल्कुल हाई पिच में इन्होंने पिच करी थी. एंड since then I was inspired by his journey. Welcome Shivi to the show. He is the founder of Clear Dekho, building a billion eyes or more than that vision, which is what we learn from you today, right? It is an honor. Yeah. No, and thank you so much, for coming and taking our invitation to be on this show from your busy schedule. No, I was supposed to be the first one, if I remember. I know. And as Akash said, I really admire you, and you are a true, very dear friend, and I've seen your journey. And it has been really, really inspirational. A lot of challenges, and we keep discussing amongst ourselves कि यार देख आकाश ने वो इशू हुआ था उसको ऐसे सॉल्व किया है और अब वो कर रहा है. क्या बात कर रहे Yes, exactly. And long way, long journey. Long journey for both of us, man. And it's good that we are all sitting even after 6 years of building the business together, right? And you're building your amazing journey. I'm building, Zypp. और मैं ये कहता हूँ जो स्टार्टअप 2-3 साल चल गया, मतलब वो चल गया एटलीस्ट, वो सर्वाइवल मोड से बाहर आ चुका है. And that is good to see that, we are both sitting in the same room doing this. Yeah. So, I think, मेरा हमेशा से, while we've not spoken a lot about your business, we talk about कुछ Zypp के साथ कर लेते हैं Clear Dekho में, but मुझे ये बताओ कि how did you stumbled on such a large opportunity of eyes while you had a large competition in front of you when you were starting also. I think Lenskart, जब कोई भी चश्मा बेचने जाते हो या किसी भी इन्वेस्टर से मिलते हो, तो मैं स्टार्ट इससे करना चाहूंगा, बोलता हो यार लेंसकार्ट के साथ आप क्या करोगे? How do you tackle that answer? What is your pitch there? So I don't think about Lenskart, or I don't think about any other player who are actually making the market or disrupting the market, because so मेरी journey शुरू हुई. I was working in an HDFC bank as a personal banker, very sales oriented profile. I didn't like the culture of HDFC bank. That is why I quit it. A very short stint, but got an opportunity to work for Warby. So Warby Parker is one of the biggest in They are Japanese? No, they are US. They are US based. So they had a program called as Vision Spring. Okay. So I was part of their program where I was supposed to go in the villages, conduct eye camps for consumers, and deliver eyeglasses to the needy. And this was a huge program across developing nations. Sure. India was being at the forefront of it. I was part of those programs. And initially मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, frankly, and it was a very, very bad job initially, and it was very tiresome because I was 24 days on the field, especially in very rural areas. Not my cup of tea initially, because I was not an eye care professional. So I don't know why I stumbled upon it, but my professor at my MBA college inspired me that it is a good startup doing something good in healthcare, and you should at least explore. So that's why I stumbled upon it and I started working on it. Gradually, when I started doing this, जब मैं मतलब कस्टमर से मिलता था, गाँव में जाता था, तो I was really shocked to see कि इंडिया में बहुत ज़्यादा आई केयर का प्रॉब्लम है. अच्छा. एंड देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब अगर मैं एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो 60 करोड़ लोगों को चश्मा चाहिए इंडिया में, आउट ऑफ 140 करोड़ पॉपुलेशन.
अच्छा, और उसमें से almost 50%, and out of that, close to 25 crore people are still struggling to get glasses within remote areas. Because if you go to very remote areas, if you go to smaller villages, smaller towns, you won't find standardized practices, standardized eye care services available तो everywhere. चश्मे नहीं लगाते लोग? नहीं लगाते, so उन्हें दिखता नहीं है कुछ भी नहीं, लेकिन Oh my God, they survive without seeing clearly. Yes, because it is not a life-threatening problem, no? So you're not dying tomorrow. हाँ, but You can just adjust your eyes to a vision and ऐसे try ऐसे to करके देख रहे हैं. try to live your life, but which is very kind of risky. But it can be life threatening also if you're driving and yes, you know, so walking. I'll share few of my very good experiences which I learned while working with them, and you won't be you will be surprised to know that India is the blind capital of the world. We have got 15 million people going blind. Wow. Which is 50% of the entire blind population of the world. India is cataract capital of the world, and cataract India में इसलिए होता है क्योंकि एक तो sunlight prone territory है, we are a farming led population economy, as well as eye care completely neglected है. So आपकी life में आपको अगर बीमारी होती है या you are not fit, you don't think about eyes. No one thinks about eyes, right? सही बात है. And that has been the core. और लोगों को पसंद भी नहीं है, शायद डरते हैं चश्मा लगाने से. बचपन में जैसे मेरे को याद है. It has been more of a taboo as well. हाँ, taboo. And plus looks. हाँ, plus awareness कम है लोगों को कि इससे affected diseases क्या है. Right. So अगर आप let's say eye की care नहीं करते हो तो ultimately होना क्या है? तो वो awareness नहीं है लोगों को लगता है ठीक है चल जाएगा, अभी चल जाएगा, 10 साल और निकाल लेते हैं, 5 साल और निकाल लेते हैं, फिर लगा लेंगे. पर वो नंबर बढ़ता रहता है और eventually it leads to cataract. Because refractive error is the second biggest issue of cataract in the world. Oh my God. And there's a lot of WHO research towards it. So I was doing this and daily मुझे बहुत issues आते थे and मैं customer से पूछता रहता था. हमारे ताऊ जी थे, ताई जी थी और बहुत बूढ़े लोग भी थे और बच्चे भी थे. मैं उनसे पूछता था कि आप चश्मा क्यों नहीं लगाते? अरे बेटा क्या जरूरत है चश्मा लगाने की, दिख तो रहा ही है. अच्छा. तो मैंने कहा कि बट इवेंचुअली आपकी आंखें खराब हो जाएंगी. वो तब की तब देखेंगे. So that attitude led to all these issues, and 1 in 3 people in the world is currently requiring corrected eye care and vision. Which is almost, and with 90% people living out of developing world, India is at the forefront of it. So I think मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि there is a lot of problems and we should solve it. Wow. So वहाँ से मेरा I think ये trigger point था. Okay. और तो किस लोकेशन में थे ये वॉरबी पाकर में तुम जब जॉब कर रहे थे? मैं दिल्ली बेस्ड था. लेकिन You are born and brought up in Delhi? No, I'm not born. I'm कहाँ से? born and brought up in Meerut. Nice. So my entire background is farming background. Right? अच्छा. So हम agriculture समझते हैं, गाँव भी समझते हैं अच्छे से. So I was situated out Delhi, but I was traveling across. So we were doing programs in Bangladesh, Nepal. I used to travel to Nepal a lot. Sure. तो वहाँ पे काफी remote areas है जहाँ पे कोई eye care नहीं है. Okay. अच्छी. So that was my trigger. ठीक है. And I understood that this is the opportunity. Something has to be done there. पर तुमने एक बात मुझे बोली थी that you were not a guy who wanted to be an entrepreneur, but you stumbled to entrepreneurship. वो कैसे हुआ? So कोई प्लानिंग नहीं थी एंटरप्रेन्योरशिप, पता ही नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो ड्रीम नहीं था. जैसे मेरे को तो ड्रीम था बचपन में कि भैया कोई धंधा करूंगा, बिजनेसमैन बनना है. नहीं, नहीं था. You were okay with the job. Frankly कोई ड्रीम नहीं था. Sure. Very much okay with the job. ठीक है. Although I hated being on the field, but eventually it became a practice. So now I love being on the field. So just opposite हो गया. Right. And मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन था कस्टमर से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया में मैं खुद वर्क कर रहा हूँ. So which is एंड वहीं से आपको रियल सक्सेस मिलती है, क्योंकि जब तक आप कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते, आप कुछ भी बोर्ड रूम में बैठ के कुछ भी प्लानिंग कर लो, वो फेल है. सही बात है. तो वहां जाके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाला. करेक्ट. So I was once I traveled to US, met the board of Bobby and Vision Spring. Okay. And I accidentally ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो इट वाज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क. Sure. और वो प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं after 2 months, 3 months, 4 months. Okay. And then we are out of that territory. ठीक है. तो वहाँ पे जो another demand है, उसको cater करने के लिए there is no one else. So मुझे लगा कि sustainable activity चाहिए. Otherwise कोई meaning नहीं है इस activity का. It is more of a charitable. मतलब project लिख दिया, काम कर लिया, but opportunity तो solve ही नहीं हुई. हाँ, तो so I pitched them कि क्यों ना हम centers खोलें, stores खोलें,
small shops, not big flagship stores, and just be there to solve these problems every time. Wow. And we keep doing camps forever. Wow. तो they rejected the idea. They said कि नहीं, हम लोग for profit initiative नहीं कर सकते due to some reason. And so I was a little bit dejected. मैंने कहा कि बहुत अच्छा project है मेरे हिसाब से, and whatever people are doing at the top level is good, but majority India के लिए कुछ सोच नहीं रहा है, मतलब हमारे भारत के लिए कुछ नहीं सोच रहा है. सही बात है. और मेरे हिसाब से this is one of the, and you won't imagine, eye care in terms of healthcare is the least priority. And is least priority for everyone. And India is the blind capital also, of the for world. Me also. My Believe God. me. अच्छा. Seriously, I'm telling सही you. बात है वैसे. We don't care about. Yes, we don't care about it. We should do that. I finalized a project with Mahindra and Mahindra. So Mahindra and Mahindra CSR does a lot of projects over. गुरनानी जी है ना? जी. फिर with आपका गुरनानी तो Tech Mahindra में. अच्छा, we did a project with Tech Mahindra. Okay, main Mahindra. Okay. So I was working with their CSR wing, and they were very much focused on girl education, welfare, livelihood. But Eyecare था ही नहीं कहीं. Okay. We introduced that. Okay. We introduced that with Schneider. We introduced that with Apollo Tires. You won't imagine, एक मैं project करा था यहाँ पे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली में, वहाँ 50,000 कमर्शियल ट्रक डेली इन एंड आउट होते हैं. अच्छा. ठीक है. हाँ. हमने ट्रक ड्राइवर्स 3500 ट्रक ड्राइवर्स का स्क्रीनिंग किया 3500. Okay. And 85% truck drivers को दिखता ही नहीं था beyond 200. My goodness, if they're driving truck. Yes. Crazy. So it was so revelation, man. We were really shocked to see that number, and we gave them glasses. And this was out of the Mahindra project. Yes, no, Apollo Tires. Apollo Tires. Okay. And that was one big kind of data check for us, that kind of a reality check that all the truck drivers were driving across. It's so unsafe for everyone else. Yeah. So ऐसे projects की वजह this was when you were in Wobby. You did this as a इन्हीं data CSR की वजह से मैंने उन्हें pitch किया कि आप अगर आपको revolution लाना है और आपको real success चाहिए, तो you need to be there. किसको pitch किया? 30 years to the board. To the board of Wobby, where founders were there, or the board of directors. Okay. And I think it didn't make sense to them. Achha. And, due to their own agendas, and their mandate was different. So वो मुझे struck कर गया idea. और and when I came back, I thought and I discussed with my family कि यार करते हैं कुछ और मुझे करना है, and मेरे हिसाब से ये opportunity है, ये next big thing है, and मेरे हिसाब से healthcare में Eyecare को top priority में लेके आना है. Oh. ये मेरा एक mission बन गया. Wow. And I think that was the case. And फिर मैं यही सोचने लगा कि मैं resign करूँ या क्या करूँ या नहीं करूँ. Okay. Then I was completely confused क्योंकि अब मुझे आगे का प्लान पता ही नहीं था. सही बात है. ये तो समझ में आ गया कि ये करना है, लेकिन इसे करना कैसे है. हाँ. So कोई गाइडेंस नहीं थी कुछ खास, और मतलब इनिशियली तो फैमिली सपोर्टिव होती नहीं है किसी की. नहीं होती. तो फैमिली ने भी बोला यार अच्छा जॉब है, आप अच्छा कर रहे हो, क्या और कैसे करोगे, कौन सपोर्ट करेगा तुम्हें, पैसा कहाँ से आएगा. मैंने कहा पता नहीं. मतलब मेरे पास सारे आंसर्स तो है नहीं. सही बात. और सारे आंसर्स होते तो मैं कर ही लेता, लेकिन बस मुझे करना है. You worked in Wobby for 5 years. And what was your designation when you? Project executive था initially, फिर then partnerships head बन गया. Wow. India का partnerships head. And leaving that job at a good salary. Yeah. Everything was. मतलब मुझे तुम्हारी stories. I was also doing sourcing for them. अच्छा. So that was another eye opener where I learned कि 98% of the world's eyewear is made in China. Yeah. And I was in China doing this research and making the supply chain for them. And I left that also. बट मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इनकी, मतलब मुझे वो शाहरुख खान याद आ रहा है जो स्वदेश मूवी में था, जिसने यूएस में गया था और उसने देखा कि इंडिया में प्रॉब्लम्स बहुत हैं. उसको एक प्रोजेक्ट मिला इंडिया में, थोड़ा सा उसने देखा यार बट ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम तो देख ली मैंने, स्टडी भी बना ली मैं वापस, बट रह नहीं पाया. So you came back and you quit your job and you started up solving the problem. So you are a real Swades guy in the startup world, man. मैं वो नहीं कहूँगा. मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल. लेकिन मतलब I am very very passionate towards my country. I want my country to be on the top. Yeah. That is very clear. Yeah. And I am very much determined towards it. Wow. So that has been a core. मतलब वो तो दिल से है. Correct. लेकिन so ये start था सर. Yeah. Wow. That's how Clear Dekho started, was born. So मैंने कभी नहीं सोचा कि Lenskart is there. हाँ. Titan is there. अच्छा वो सोचा ही नहीं, बस प्रॉब्लम कर दिख गई, कोई सॉल्व नहीं कर रहा, मैं कर सकता हूँ, ट्राई करूंगा. मेरे हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अप्रोक्सीमेटली 25-30 करोड़ जनता है जिसको चश्मा हमें देना है.
How can a player give that? सही बात है, कोई अकेला नहीं दे सकता, कोई नहीं कर सकता सर. इट इज अ कंबाइंड एफर्ट. वाओ. एंड इट इज ऑलवेज अ कंबाइंड एफर्ट. Wow. एंड मेरे हिसाब से अगर हम सब ज्वाइन करके इस मिशन को करेंगे तो कंज्यूमर्स का बेनिफिट है एंड बिजनेस तो बन जाएगा. करेक्ट. बिजनेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, धंधा बन जाएगा. सो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. वाओ. इन फैक्ट आई थिंक बोथ ऑफ यू, even Piyush of Lenskart says the same, and you are also saying कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है यार, मजा आ रहा है सॉल्व करने में, बन जाएगा. राइट, विच इज अमेजिंग. नाउ सो बट आपने तो फिर क्लियर देखो में फर्क क्या है. While I understand, and I think I would love for the audience also to know, I think you have centered your business around tier 2, tier 3 towns because that's what you saw as a problem, right? मुझे बताओ, क्या लेंसकार्ट ये नहीं करता, क्या कोई और ये नहीं कर रहा, और आप अगर कर रहे हो तो आप कैसे अलग हो? How are you different as a business? What all is different in So yours? when we started, we were very clear that we want to target mass market. Achha. And when we say mass market, we wanted to be very clear on the definition part that जो low income households हैं, blue collars हैं, and especially people who cannot afford, मतलब जिनको 300-400 रुपए में से भी ज्यादा में दिक्कत होती है, क्या हम उनको चश्मा दे सकते हैं? क्या हम उनको उनका अडॉप्शन पैटर्न, उनका कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर सकते हैं? जो लोग चश्मा नहीं पहनते, क्या हम उनको चश्मा पहना सकते हैं? क्या हम उनकी आई चेकअप्स कर सकते हैं? तो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट था. एंड सिंस आई हैव बीन वर्किंग अक्रॉस फील्ड, स्पेशली विलेज एरियाज, तो मैं चाहता था कि मैं नीचे से शुरू करूं. तो बॉटम अप अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच नहीं है. Sure. So we are quite different from other brands. Any other brand? Yeah, very different. So ये core vision है. Having said that, there are always overlapping. So we are in the towns where Lenskart is also there, Titan is also there, and I think that helps create a very good ecosystem for eyecare और eyewear. अगर आपके पास brands ही नहीं होंगे या आपके पास competition ही नहीं होगा, तो consumer के पास choice ही नहीं है. Correct. And everyone wants choice, right? Sure. So हम लोगों ने जो मॉडल अडॉप्ट किया वो tier 3, tier 4, tier 5, forget tier 2. अच्छा. And wow. We will talk about it. So we have opened stores in villages also. Okay. And running right now, which has been another good experience and bad experience also. So good and bad is there, but difficult to operate, especially remote areas. But very good experience in terms of giving value to the customer. क्योंकि I believe that जब तक आप value create नहीं करते ecosystem में, there is no meaning to it. Correct. So we have centered our business as well as proposition towards very smaller towns where you won't find any brands or any standardized players. अच्छा. We focus on that. We have close to 100 plus stores right now running. Wow. And primarily targeted towards these smaller cities. So 100 में से छोटे शहरों में कितने हैं? टाउन tier 4, tier 5 जो आप कह रहे हो? 80 plus. 80 plus stores are in Yes. tier 4, tier 5. मतलब हम लोग को tier 2, tier 3 नहीं समझ में आता क्या होता है. You're talking about tier 4, tier 5. Yes. वो भी है अभी इंडिया में established. बहुत है. मतलब Give me a few names of these tier 4, tier 5s. जैसे हरदोई हो गया. हरदोई. फिर आपका खलीलाबाद है. Okay. नू, ताउडू. हाँ. अच्छा. मेवात रीजन में आते हैं. Wow. फिर कैथल. Oh wow. झज्जर. हरियाणा बेल्ट में है. Correct. नो और ये गिद्धड़बाहा इन पंजाब. Oh. These are places where you have a store. Yeah. Wow. और वहाँ पे as such और stores भी हैं चश्मों के? Optical stores is the kind of so जो हमारा mom and pop structure है हमारे brand, मतलब हमारे इंडस्ट्री में, वो तो की है. Correct. उसके बिना तो आप you cannot रिटेल काउंटर पे ही सेल होती है चश्मों की ज्यादातर, है ना? So वो mainstay है. Correct. But there are no such brands who have मतलब actually disrupted the space at that level. और मैं सुनता हूँ कि वहाँ पे लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है as such, है ना? People have money there. And talking about retail, so India का retail landscape जबरदस्त चेंज हो रहा है. अच्छा. And to believe that statement, you need to go in these towns and see the market. Yeah. You won't imagine people are just making big spaces, commercial spaces, okay, and brands are ready to sign up. Yeah. And the good example is firstcry.com. So sure. Firstcry is coming in smaller towns. Okay. And big space, targeting those customers at 200 rupees, 300 rupees. Value retail, what I सही बात है. So we are the first ones to do value retail. We have just signed up V-Mart. Oh. Brand. So V-Mart the value retail. Vishal retail? नहीं. No, not the Vishal. Okay, then?
V-Mart is another chain. अच्छा, And we तो are also उसमें शॉप इन शॉप. yeah, not shop and shop. उनके सेंटर के पास हमने अपना स्टोर ओके खोला है. ओके So ओके, नाइस. that is again targeted towards the consumer. V-Mart भी शायद उसी मास मार्केट. मुझे 200 रुपए में 300 रुपए में टारगेट करना है कस्टमर, या मुझे वो वैल्यू क्रिएट करनी है फॉर द कंज्यूमर्स हु कैन नॉट अफोर्ड. आई थिंक विशाल मेगा मार्ट की भी यही स्ट्रैटेजी है. जैसे मैं अल्मोड़ा जाता हूँ तो वहां पे विशाल मेगा मार्ट में बहुत भीड़ लगी रहती है, और इतना अच्छा सामान, इतना सस्ता सामान मिलता है वहां. But interestingly, the way, as you are saying, tier 3, tier 4 is growing. So Almora possibly is a district, I would call it still tier 3, right? And there, वैसे मेरा, सास ससुर वहीं रहते हैं. It's my in-laws place, but I think I can see that evolve in the last few years, that now there is a, mall there. Yes. There is Pantaloons there. Yes. There is, ये Jio का Trends है. Yes. और विशाल मेगा मार्ट है, और बहुत सारे कैफेज खुले हुए हैं, बहुत शॉपिंग हो रही है. So this is the market that you are capturing in a way. Because very interesting. जो consumers हैं, you have to understand that there are youth, lot of youth, who wants to shop from new age brands, who wants to have that experience, that edge. Correct. But cannot spend more than their pocket size. So they want the brand experience at a low cost. Yes. Which is what a Vishal Mega Mart would do, and which is what is clear Dekho strategy. Yes. Is that clear? Yeah. So you are the Vishal Mega Mart of specs. Yeah. Eyewear. That's the pitch. Perfect. Got it. Now, I think this is very interesting. तो अब tier 2, tier 3 या tier 4, tier 5 क्रैक करने के लिए अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो धंधा बनाना चाहते हैं और शायद सोच भी नहीं रहे, बट विद दिस कॉन्वर्सेशन मे बी दे विल फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि वहां जाके देखो, कुछ 15-20 दिन रहो और सीखो वहां की क्या प्रॉब्लम्स है. मे बी दैट इज वन वे, बट व्हाट आर द अदर गाइडेंस that you would want to give someone who's thinking of creating in this market? See, I think if I talk about Bharat, we have to segment it. It's not about just tier 4, tier 5. There are tier 4, tier 5 within tier 1 also. So that is very important to understand. ये भी है. There are pockets where dense population is there. जैसे गुड़गांव में हर 2 किलोमीटर में एक गांव भी है. करेक्ट. वो जो गांव, बट वो गांव थोड़ा अलग है फॉर्च्यूनर वाले गांव में. अगर आप थोड़ा सा इंटीरियर्स में जाएंगे गाजियाबाद में, क्योंकि हमारा स्पेस गाजियाबाद से, गाजियाबाद में काफी काम करते हैं. बिल्कुल. तो वहां पे आपको बहुत मतलब डेंस पॉपुलेशन मिलेगी जिसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एंड देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बिजनेस देयर. सो आई थिंक सो इंडिया को सेगमेंट कर देना चाहिए, एंड किसी भी एंटरप्रेन्योर को, एंड अंडरस्टैंड करना चाहिए इफ ही वांट्स टू बिल्ड समथिंग फॉर फैशन और लाइफस्टाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी टेक्नोलॉजी for that particular customer segment where they are situated more. How is it easy or is it difficult to reach them? In terms of value which you are driving, whether they need it or not, or you are just doing it for the sake of it. So I think those has to be first kind of research before going or venturing into anything of that sort. But there's a lot of opportunity, there's a lot of population which needs to be catered to. So for any entrepreneur, they have to first travel immediately to understand the pulse of the consumer. You cannot, as I said, यहाँ बैठ के कुछ नहीं समझ में आएगा. नहीं होगा. आप किसी का भी ज्ञान ले लो, मेरा भी ले लो, कुछ नहीं होने वाला सर. तो कितना टाइम रुकना चाहिए एक फाउंडर को अगर धंधा बनाना है वहाँ पे? तो डिपेंड करता है, मतलब I can't answer that. मतलब कम से कम 15-20 दिन तो रहो, 1 महीना तो रहो, रहना चाहिए. वहाँ की प्रॉब्लम समझो, कस्टमर से मिलो, देखो मार्केट कैसा चल रहा है, लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, गाड़ियां हैं उनके पास या नहीं, या मोटरसाइकिल है या नहीं, गाड़ी ठीक कहाँ कराते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है. कौन सी है, क्या वो ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं अभी या नहीं हो रहे. करेक्ट. लेकिन आप यू नो दैट एंटायर इंडिया, एंटायर tier 3, tier 4, tier 5 इंडिया इज मतलब बाइक. Correct. It's all two-wheeler market. It's a two-wheeler market. Agreed. So, absolutely. So that gives a very clear indication that where the market is. बहुत opportunity है मतलब. जबरदस्त. अच्छा. तो पहले तो वहां जाके रहो, वहां की प्रॉब्लम समझो. बट आर यू सेइंग दैट वहां पे ब्रांड्स का, क्योंकि एक लोकल कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा वहां पे. जैसे मैं नहीं, इनमें स्पेक्स की बात नहीं कर रहा मैं अभी. मैं हमारे एज एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूं. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग. यू आर द फर्स्ट वंस टू टारगेट दिस मार्केट. I think in the startup world, we all are first ones to right now start building for the next stage. Yes. Okay, so it will take some time. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कल आपको सक्सेस मिलने वाला है और आपने ब्रांड बनाया और लोग पागलों की तरह टूट पड़ेंगे. No, ऐसा नहीं होगा. So it is a very long vision. So what you have seen in tier 1, what you have seen for consumers at mid premium level or premium level, the same will replicate within next decade. तो start तो कभी करना पड़ेगा ना. आज हम start करेंगे तभी तो consumer behavior बनेगा. बिल्कुल ठीक है.
आज आप पूरा यूपीआई पे हो ना, yeah. पहले तो नहीं थे ना, पहले तो नहीं थे, तो फिर किसी ने तो शुरू किया कभी. wow. So I think that is our thought process. So when Hmm. when we started this, we had a Hmm. vision for another 10 years, 20 Right. years, obviously. Right. We cannot create a brand for Hmm. in 3 years, 5 years, Hmm. because consumers do not respond like that. Correct. You don't respond like that. Yeah. If I try to sell you clear Dekho, सही you will बात है. not buy it Correct. because correct, you don't trust the brand. सही बात है. It So, takes time. It's yeah. a journey. Yeah. Yeah. Wow. नहीं यार, lot of interesting learnings. मतलब for people who are listening, I think there's huge opportunities tier 4, tier 5, and I'm just thinking that there will be a, as you're saying, first cry for, Jhajjar. There will be a, Chroma for Jhajjar. There is a, Lenskart, which is, solving, and Clear Dekho is disrupting the tier 4, tier 3, in that market. There could be a Zepto for that market. There could be so many things, right? Which are restaurant brands. Hi aap dekh lo. There could be a Domino's for Jhajjar, which might not be there. And there is. So There might be Lapinos, Yes, right? So Lapinos there's is strategy. kind of Wow. bridging that gap where people cannot afford maybe a Domino's. Yeah. Or Domino's is anyways not there, so enter. Yeah. So enter the Lovely. So that's a very interesting learning today that we've got. I think थोड़ा अब वहां पे टीयर 3, टीयर 4 में आप जाते हो तो कैसे मतलब धंधा बनाएं, ब्रांड पे फोकस करें, डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करना इज वेरी टफ. एंड यू आर इन हाउ मेनी सिटीज यू सेड? 45 cities. वाओ, दैट्स ह्यूज. तो ये कैसे सॉल्व किया आपने, मतलब? So I think, from our sector perspective, obviously distribution is one very, very important factor. Sure. And that is more related to last mile logistics. How do we deliver the glasses within a day or 2 days? Okay. Without issues. Achha. Because there are a lot of issues with glasses, because it's not easy to give an accurate pair of eyeglasses to anyone. Yeah. It is very customized. It is very, very personalized True. to any eyes. So that has been a core challenge. Wow. And it is still an ongoing challenge. I don't have a ready-made solution towards it, but I think for any business, we need to understand how the logistics happen and how deep are we going. Sure. I think the good learning is, don't be too emotional. Don't start building for the villages. You can't. It's not that easy. Right. Start with district headquarters. Sure. And then start going below. Once you have a base at district headquarters, at least. Because I think that is where you will have at least other facilities of manpower. Yeah. Facilities of basic logistics. Facilities of getting more consumers as compared to a shallow market. So I think you need to have a good market size in order to experiment your brand or your solution. And I think it is not about building a brand. I don't want to say that anyone has started building a brand. We are solving the problem first. So हम एक कपड़ा बनाते हैं और कस्टमर को बोलते हैं ये अच्छा कपड़ा है, आप पहनिए इसे, या हम बोलते हैं ये अच्छा जूता है, या हम बोलते हैं ये अच्छा मोबाइल फोन है. Correct. We don't tell that this is a brand which changes everything. I think brand is built over time. Correct. Where people start using your stuff and start repeating it and start doing word of mouth. Yeah. That's true. जब तक उनको वो solution नहीं दिखेगा तो मेरे हिसाब से किसी भी entrepreneur के लिए brand is secondary. First is solution. Okay. So create the right solution. So product market fit, right? Correct. So product market fit अगर नहीं है और validation नहीं है तो आप कोई सा भी brand लेके चले जाओ फेल ही होना है. सही बात है. So consumers will see the board going up and then going down. True. It happens to we have seen so many businesses. Yeah. So I think right solution has to be the recipe. First recipe to target the market. Got it. And for you, how does it work? Like, are you into manufacturing also, or you are into sourcing? But eventually we will be, because that is more appropriate towards getting your cost of goods sold lower. Correct. Because we would want to cut margins across the trade. True. So, but right now we are not. We are sourcing it from multiple manufacturers. Achha. We are getting it kind of multiple manufacturers. Yeah, multiple. And your entire warehousing is at nationally at one place? Yeah, that's also distributed. 80 to 90%, yes, at centrally. Centralized. 10% distributed. Achha. We are a franchise-driven brand as of now. So we look at multiple stores, little bigger stores, to become a fulfillment unit as well. In fact, मुझे ये भी थोड़ा समझाओ, which is interesting about your business, that if there's already a eyewear shop, you are also doing the OYO version of it, which is you are converting it into. We tried it, but we failed. वो अब नहीं कर रहे. अच्छा.
So we failed because and it was one of a very good experience to learn because you cannot just create OYO in any category. हाँ. Okay, so मुझे समझा रहा कि वो आप करते हो अभी भी. This is a good learning. हाँ. पहले करे थे. हाँ. मतलब we got मतलब inspired by obviously OYO and Ritesh. Who is one of your investors also. Yeah. And I look up to him a lot. But I think it's not that easy to replicate because our business is very different. And the requirement for optometrist is paramount in our business. Okay, so the optometrist checks the eyes. Correct. Now, if the owner is an optometrist, he doesn't want to listen to your practices. Okay. He gets the result. Yeah. He will see the result. What you are building for him, and if you have transformed the business, his business to 3x from x to 3x, right, over a period of a year. Now he understands. Okay, customer तो बन गए. अब मैं खुद भी चला सकता हूँ. Oh. So he is not very loyal towards your mission, because he is not so far fetched. Correct. He's there. He's a good guy to be there because he has been running the business. Correct. But he doesn't understand the practices. Yeah. And then there is a lot of issues with non-standardized practices. So आप आ रहे हो, आप मेरे नोन हो, अरे सर कोई दिक्कत नहीं, आपको 20% एक्स्ट्रा दे देंगे. सही है. ठीक है, वो आ रहे हैं, वो नए कस्टमर हैं, तो उनको सेम प्रोडक्ट 1800 और महंगा दे देंगे. तो वो लॉयल नहीं बन पाएंगे. सही बात. आप तो लॉयल हो ही. करेक्ट. लेकिन उनको तो वैल्यू नहीं क्रिएट हो पाई ना. सो ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में मेरे हिसाब से. विच शुड कम इवेंचुअली. बट जब तक वो नहीं आएगी तब तक आपको वो जेकर्व नहीं दिखेगा इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ऑप्शन. सही बात. जो आपको मोबाइल फोन में या फिर रील्स में दिखाए. करेक्ट. तो आपको जो शॉर्ट वीडियो कंटेंट में जेकर्व दिखाए, वो जेकर्व इस कैटेगरी में आने के लिए ट्रांसपेरेंसी हैज टू. हां, बिकॉज़ इट्स सेम फॉर एवरीवन. ऑब्वियसली. ऑब्वियसली व्हेन यू आर बाइंग अ लेंस और अ फ्रेम और एनी प्रोडक्ट, करेक्ट, you and him or any other one should know कि यार मुझे 1000 रुपए में ये मिलेगा. सही बात. या ये नहीं मिलेगा. सही बात. सिंपल. करेक्ट. वो ब्रांड का एसेंस नहीं आता. नहीं तो फिर वो नॉर्मल मॉम एंड पॉप स्टोर वाली बात हो गई अगर वो क्लैरिटी नहीं है. राइट. सो वी डिड दैट. वी फेल्ड एंड देयर इज सो मच टू लर्न देयर. वी आई थिंक हमारी भी कुछ गलतियां थी हमारे एंड पर कि हम लोग समझ नहीं पाए कि मैनेज कैसे करना इनिशियली. एंड इट वाज very quick expansion. Sure. And it was not very regulated expansion. So यहाँ खोल रहे हैं, फिर वहां से 50 किलोमीटर दूर खोल रहे हैं, फिर वहां से 100 किलोमीटर दूर खोल रहे हैं. जो low hanging fruits थे वो हमने ले लिए. Correct. We should have said no. तो वहां पे फिर हम stretch हो गए in terms of delivery, logistics, supply side, customer handling, support. And उसमें हम burn करना शुरू कर दिए. और जब हम burn करना शुरू कर दिए तो फिर मतलब I keep a check कि आज 2 रुपए कमाए हैं या नहीं कमाए. तो फिर मैं थोड़ा सा मतलब आई गॉट इन पैनिक. स्ट्रेस आ गया. करेक्ट. एंड मैंने बोला नहीं यार, आई थिंक इट इज नॉट गोइंग करेक्ट. एंड देन वी डिड आवर रिसर्च एज वेल. सो वी हॉल्टेड दैट. नहीं, अब ये नहीं करता है. क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर फर्स्ट. कंज्यूमर को हम पेन नहीं कर सकते, बाकी हम अपने आप को कितना ही पेन कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट हैज बीन द कोर फोरफ्रंट. नाइस. सो दैट इज व्हाई वी हॉल्टेड दैट. Okay, so that project doesn't work. You open your own stores now, right from day zero. खुद ही का स्टोर, खुद ही की टीम, खुद ही का सब कुछ, है ना. नाइस. आई थिंक दैट वर्क्स बेटर till a certain scale. Till a certain, है ना. Yeah. When you become till the time those processes are not built, you should do it yourself. Yes. Zip में भी हम सोचते हैं कभी कभी फ्रेंचाइजी खोलते हैं, बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार वो गलत कर देगा तो फिर आपका ब्रांड खत्म. You do it well, you do it at least in 5 cities, create those processes which can be replicated, then give a franchisee. Makes sense. Good learning. अब ये बताओ कि for an entrepreneur, how important is to be a salesperson? Do you think that it's like very very important या फिर उसके बिना भी चल सकता है? मैं एक स्टोरी बताता हूँ. बताओ. So मैं HDFC बैंक में. हाँ. और HDFC बैंक is all about sales. हाँ. Zero service, 100% sales. ले ली तुमने. ठीक है. It's okay. हाँ, banks are usually like that. HDFC बैंक is core sales. अच्छा. And I was in the sales profile. So हमें ये बोला जाता था very clearly कि आपको आज मुझे 4 अकाउंट देने हैं, 2 LI करनी है, लाइफ इंश्योरेंस, एक आपको सिप करनी है गोल्ड की, एक ये LAP करना है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एक आपको ये करना है, वो करना है. तो मैं सुबह जब आता था 8:30 बजे बैंक में, तो मुझे पूरा टारगेट शीट दे दिया. अच्छा. ये तो कोई सुन ही नहीं रहा है कि कस्टमर है या नहीं, कस्टमर को ये चाहिए या नहीं चाहिए, क्या ये मुझे आता भी है समझ में या नहीं आता है, am I equipped to sell this product or not. आपको ही बेचना है, मुझे शाम तक चाहिए.
तो आई वाज सो मच इन स्ट्रेस दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअली कि करना क्या है। ओह माय गॉड। तो फिर मैंने अपने सीनियर से कुछ हेल्प लेकर और मैंने देखा कि कैसे कैसे कर रहे हैं, तो वो लोग देवर सेलिंग एनीथिंग टू एनीवन। अच्छा। मतलब एक 80 इयर्स ओल्ड लेडी है, मतलब ग्रैंडमदर है, शी हैज नो वन लेफ्ट नाउ इन हर फैमिली, एंड उनके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है और उसको आप लाइफ इंश्योरेंस में डाल दो, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम है, बताओ। और आप उनको बोल रहे हो कि ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा, अरे यार क्या रिटर्न देगा ये। सो एंड शी डजंट हैव मतलब हार्डली फ्यू पीपल इन अ फैमिली बिकॉज़ एवरीवन इज नॉट देयर। सो आई डिडंट लाइक दैट आइडिया। हैविंग सेड दैट, so I told my seniors that I want to quit, I can't do this anymore, and it is wrong. Shivi, we understand that it is wrong, but you cannot fear away from sales. ये आप wrong कर रहे हो। आपका ये point सही है कि ये आप नहीं कर सकते, लेकिन आप sales नहीं छोड़ सकते अपनी life में। That was the first learning, and I realized it now when I'm running clear. You have to be a salesperson. You have to be a salesperson. Even if you don't like sales, you have to start learning sales. Right. Ethical sales, Correct. like ethical hacking. Correct. Not unethical sales. No, sales is critical. But sales is critical. You are right. Every founder has to be a salesperson because he has to sell a story first before anything else. Absolutely. तो सेल होना जरूरी है धंधा स्टार्ट करने में। परफेक्ट। Whom do you see as a mentor in life? मतलब कुछ इसके बारे में बताओ। Do you, yeah, father? मतलब he is a never give up kind of a guy. Wow. And very positive. Although he was negative initially against clear Dekho. अच्छा। But वो हर पेरेंट का एक वो but हार्ट होता है। मतलब I have learned a lot from him, and it is more of a knowledge session. So when we sit, whenever we sit, we are always discussing some kind of world problem. कि भैया ये बताओ, ये जो एयरप्लेन्स हैं, इनका कार्बन एमिशन कैसे कम होगा। अच्छा, क्या बात है। ये अनरिलेटेड टॉपिक है, लेकिन बस करना है। so वो मुझे मतलब उससे काफी मुझे नॉलेज मिल गया। When I started this, I discussed with him, my mother and everyone. So, but उन्होंने कहा नहीं, तो फिर भी फादर सपोर्टेड रहते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, फेलियर इज पार्सल ऑफ द स्टोरी, लर्निंग होनी जरूरी है। पैसा आप कमाओ ना कमाओ, नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए लाइफ में। वेरी नाइस। सो आई थिंक दैट हैज बीन द कोर प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। सो वहीं से मैं सीख रहा हूँ। Amazing. बाकी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। नहीं, absolutely. जिनसे मैं सीख रहा हूँ, जिनके चैलेंजेस देख रहे हैं। Very nice. ये वो बहुत अच्छा हो गया है that now we have such an amazing founder circle between us in Delhi NCR that on a call away we can meet up, we can discuss problems, we can share यार कि कौन है तेरा लॉयर, जरा बात करा, कैसे मैं ये प्रॉब्लम से नेविगेट करूं। This is very good in NCR which is happening. I don't know how much of that is happening in Bangalore, but we all decided कि भाई NCR में तो ये बनाना है। Now I think it's coming along. Very happy with that. चलिए बताओ, तुमने बहुत सारे फंडिंग राउंड रेज करे हैं, ऐसा मेरे को टीम ने बताया कि 8-9 फंडिंग राउंड रेज कर लिए हैं तुमने। नहीं, 8-9 नहीं, फिर 3 to 4। अच्छा, तो कैसे, मतलब व्हाट इज योर व्हाट इज द सीक्रेट रेसिपी टू गेट फंड्स? यार आप बेटर। नहीं यार, मैं नहीं, आज आपका मौका है यार। नहीं आई एम नॉट दैट एट दैट लेवल, बट आई थिंक कुछ सीक्रेट रेसिपी तो नहीं है। मतलब आकाश, मैं फर्स्ट डे से जब कर रहा हूँ तो स्ट्रगल ही है जो मुझे फील होता है। राइट। तो आई थिंक यू हैव टू सेल योर स्टोरी फर्स्ट, सेल योरसेल्फ फर्स्ट, कि हाउ मच इक्विप्ड यू आर टू फॉर देम टू ट्रस्ट यू ऑन देयर हार्ड अर्न्ड मनी, एंड वेदर यू विल मेक इट काउंट ऑन दैट मनी और नॉट। हम प्रोजेक्शंस बनाते हैं, हम पिच बनाते हैं, वो सब एक पार्ट है, बट आई थिंक द क्रस्ट ऑफ द स्टोरी सारे जब इन्वेस्टर्स चेक लिख रहे होते हैं तो उससे पहले बस एक क्वेश्चन ही पूछते हैं, भाई पैसा तो नहीं डूबेगा? ठीक है, आप कर लो। तुम क्या बोलते हो इसका जवाब? मैंने कहा सर, डूबना तो नहीं चाहिए। मेरा बेस्ट एफर्ट रहेगा, बिकॉज़ इक्विटी इज अ लायबिलिटी, आई अंडरस्टैंड दैट। करेक्ट। इट इज नॉट एन एसेट, सो आई हैव टू रिटर्न दैट मनी बैक, and we have to deliver. So but obviously there is a risk. Correct. It is a risk capital. So you also understand that you are investing in a risk capital, and that has been happened with us in a franchisee also. We are very clear. See, you are investing in a risk capital. You are investing in a business. Like you give 1 crore rupees, invest 1 crore rupees in your son's education. Right. क्या गारंटी है आपका सन सक्सेसफुल रहेगा सर? सही बात। फेल भी हो सकता है ना। बिल्कुल सही। तो फिर कोई आपको पैसा वापस देने वाला है क्या? नहीं ना। आप डॉक्टर के प्रिपरेशन उसमें आप लगाते हो ना 1 करोड़। नाइस, है ना। सो मैं ये बोलता हूँ सबको कि भाई जब आपके बच्चे की कोई गारंटी नहीं है, या आपकी लाइफ की कोई गारंटी है, तो हाउ कैन समवन गिव यू गारंटी टुवर्ड्स रिस्क कैपिटल?
करेक्ट और अगर आपको रिस्क खेलना ही नहीं था तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, आपको बैंक में रखना चाहिए पैसा, करेक्ट, एंड खुश रहना, बस satisfied रहना चाहिए. यस perfect. So that has been my philosophy. And but I think it has been a challenging journey across rounds. I am very fortunate to have very good investors. Achha. And I'm not talking about big funds. I don't have big funds, but I have investors who like to understand my problems. Nice. Who like to be involved. And we have so many sessions where I'm always discussing problems with my investors. Wow. अच्छा, That's amazing. हाँ, कुछ डिस्कस करते ही नहीं है शायद. अच्छा, हम अचीवमेंट तो शायद ही कुछ डिस्कस करते होंगे, हम प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं. सर अब ये इशू है, ये बताओ कैसे सॉल्व करेंगे. एंड एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग. आई हैव अ वेरी वेरी पार्टिसिपेटिव बोर्ड. आई एम वेरी लकी टुवर्ड्स इट. And I have families who have very good retail experience, business experience, who have been guiding me. So that has been fortunate on my part. But I think we have to sell ourselves. We have to help them understand that they are not putting money somewhere where it is a lost cause. True. And we understand the market well. It has to be a very researched kind of conversation. Correct. It should not be a kind of a gray area where I am also confused. They are so confused, obviously. So वो नहीं होना चाहिए. True. But how did you, bring Ritesh Agarwal of Oyo on your cap table? वो थोड़ा सा बताओ. What was the conversation like? How did you meet him? What were his concerns about your business, if there were? So Ritesh is a very, very great entrepreneur. Once in a lifetime you can meet someone like that. Yeah. He is very humble. That is very clear. I was not planning to get Ritesh. ऐसा कुछ plan नहीं था. So Ritesh का एक session हो रहा था Venture Catalyst के show पे. You were also there. Oh, nice. नहीं, मैं नहीं था. You were not there? नहीं. Okay. So Dr. Abu Ranjit Sharma. हाँ, correct. And so ऐसे सब लोग pitch कर रहे थे short content. तो मैंने भी pitch किया. I think वहाँ पे तो इतना strike नहीं किया, but अबू सर ने बोला एक बार रितेश को आप idea pitch करो. And Ritesh की भी काफी learning रही है in terms of converting the model, and you also want to experiment that. True. You want to also learn from him how to scale the project at that level. So वो एक angle था where I started pitching to him via sir. Acha, so Apurv sir has been of great help. Yeah. I think we must appreciate 100%, Dr. Apurv. 100%. He's a killer investor. Yeah, he helps his founders so well. And the good part, the best part about Dr. Apurv is आप कितना भी डाउन हो सर, आपका फंडिंग का इशू है, आपका रनवे का इशू है, आपका सर्वाइवल का इशू है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप स्ट्रेस में हो, डॉक्टर अपूर्व इज रिलैक्स. He'll say क्या चाहिए ये बताओ. बस. So I think that is very comforting. Amazing. Yeah. So I like that. So वहाँ से अच्छा. He introduced me. And then I pitched to him. I was in Dubai attending an event and he was there. Okay. So this was after the pitch in VCATS. ठीक है. So फिर मैंने रितेश को बोला कि रितेश आई वांट 5 minutes. उसने कहा यस ऑब्वियसली, आप 10 के 15 मिनट लो. तो मैंने फिर उनको थोड़ा सा आइडिया शेयर किया. उसने कहा इट इज गुड, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. अच्छा. इट वाज लाइक 10 minutes. So you know this. If it strikes in 10 minutes, otherwise it is 10 years, you won't get the deal. Correct. You are right. So that's how it is. Lovely. Very nice. How big is your team now? So we have close to I think 70 to 80 people on the corporate level. Okay. We have close to 160, 170 people at the store level. Achha. So they are also part of the same right. payroll. And logistics is outsourced. Logistics is outsourced. It's so outsourced. we have primarily outsourced everything. Apart from core key functions like franchise development. Yeah. Like customizations, customer handling. Right. And rest is completely outsourced. Oh, lovely. We believe in outsourcing because it helps us in lower fixed overhead. Right. So वो कम होना चाहिए. Makes sense. So what do you see in people while hiring? What are a few traits? And I am 100% sure किसी के पास इसका आंसर नहीं होगा. अच्छा. और सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है सर, एंटरप्रेन्योर की किसी भी जर्नी कोई भी सुन रहा हो, HR is the most difficult portion you can solve. Really? In your life. So how to trust people, that they will come into the organization and not spoil it rather than building it. True. So that has been the story. We have got a lot of issues with people, and initially I was not a very good judge of people. Correct. How can I judge a guy in an interview? Everyone looks good. True. सब पूरा प्रिपेयर करके आते हैं, यार हमें तो जॉब चाहिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. मैंने कहा वाह क्या बात है, यही तो चाहिए. ऐसा. But eventually when मतलब
मल्टीटास्किंग नहीं हो पाता है. हाँ. I think multitasking is one key thing for a हाँ. startup Sure. hire. Sure. Second, he has to be aligned towards your vision. हाँ. So इसका passion Hmm. होना चाहिए. We have been fortunate with good number of people who have been very passionate, who have been with us from since day one. But मतलब जो technical qualifications are, that is part and parcel Correct. of this Correct. profile. But apart from that, I think these are the key attributes which I now look for people that who are ready to slog their ass and not ask for salary hikes, not ask for unnecessary things, and we will give them everything. You and me know Correct. that Correct. we are ready to give everything Correct. to them. Correct. Just that we don't want people to just keep asking for themselves and not be aligned towards delivering towards the vision or mission. Right. So I think so मैं भी यही बोलता हूँ मीटिंग पे, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा करियर तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है, तुम क्लियर देखो के बारे में सोचो, बस बाकी हम मैनेज कर लेंगे. मतलब ओवरथिंक मत करो. करेक्ट. और डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स. बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं. मतलब मैं अभी किसी बहुत ही सीनियर कंपनी के फाउंडर से मिला. ही ऑल्सो वाज शेयरिंग कि यार हमारे यहाँ भी ये सब चलता रहता है कि लोग आके कुछ हैसल में होते हैं कि भाई नौकरी का क्या होगा या फिर कुछ ये करना है. तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, डू गुड थिंग्स एंड गुड थिंग्स विल हैपन टू यू. I think that is the motion that I'm going to write somewhere on my office. Yes. Do good things and good things will happen to you. ये मेरी guarantee है ना. Yeah, makes sense. Interesting यार. और कुछ interesting चीज बताओ. कोई critical decision. So any critical decision that you think that you would want to change. Yes. बताओ. Zero marketing. You would want to change that. And we are on the verge of doing it. Oh wow. So this is a very, very critical, very difficult decision from our level because we are dependent on marketing. Right. But what I've lately realized कि आप कितना भी marketing कर लो, अगर आपके कस्टमर को वो नहीं चाहिए ना, तो आप कुछ भी कर लो नहीं लेगा. ठीक है. Correct. So what we have tried now, what we are trying now to imbibe a culture where we will be zero dependent on marketing, like zero. Oh, so you're saying that the decision was to do marketing, which was wrong. Now you do not want to do marketing. Now we don't want to do marketing. Oh, I thought it very differently. कि हमने अभी तक कोई marketing नहीं करी, अब हम करना चाहते हैं. Okay. Spend किया है. अच्छा. But I want to remove. Wow. I want to. That's a big zero. decision. That's a very, very big decision. That's a very critical decision. I don't want my sales to hamper. Correct. Or my business to hamper. Yeah. But we are taking it. We have started taking tiny steps towards it. It's a difficult decision. अच्छा. Teams have to be aligned. So मैं अपने सेल्स वालों से और अपने स्टाफ से बात करता हूँ कि कोई बात नहीं, 4 ही कस्टमर हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को 4 से बस 5 चाहिए, 6 नहीं चाहिए. ठीक है. राइट. और 5 जो चाहिए वो अपने आप आना चाहिए, हमारे सही बात. नहीं है. सही बात. अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छा चश्मा बना के दे रहे हो, कस्टमर आएगा 100%. आप समझो कस्टमर को क्या चाहिए. So we have started looking at trainings more. Sure. I think that is the step towards. Right. We have started looking at their own motivation so that they are not dependent on they don't tell you tomorrow क्योंकि retail में ना सबसे बस यही बोला जाता है फुटफॉल ही नहीं है सर, हम क्या करें. So वो छोड़ दिया जाता है दूसरे पे. That's interesting about retail. करेगी ना सर, जब वो आएगा कस्टमर तो हम कर देंगे. मैंने कहा अगर आ गए ना 10 कस्टमर तो तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना तो एक भी केटर नहीं करता. और ऐसा हुआ है. ऐसा हुआ है कि मतलब हमें ये फील हुआ कि यार यही तो रियल प्रॉब्लम है. मार्केटिंग कर देते हैं. मार्केटिंग करी और अच्छे से करी और फिर फुटफॉल आया और वो कन्वर्ट ही नहीं हुआ. 20% कन्वर्जन पे रह गए. राइट. एंड लकीली करंटली वी आर एट 80% प्लस कन्वर्जंस. बट विदाउट मार्केटिंग या विद मार्केटिंग. विद मिनिमल मार्केटिंग. बट नाउ वी आर गोइंग जीरो मार्केटिंग. It's like zero carbon emissions. Achha, wow. Mission zero emission. So I think that is very, very important for any business to understand because ठीक है, आपकी presence is important and retail itself gives you presence. When your board is there, your store is there, people within a market or residence, people are seeing it every day. Correct. So दिखता है, walk-in को convert करो ना. Correct. तो आप 4 खुश करो ना यार. I think that has जल्दबाजी नहीं है. So ये मैं critical decision ले रहा हूँ. अच्छा. And मैंने board को बोल दिया, मैंने shareholders को भी बोल दिया कि कितना burn करते थे मार्केटिंग में अभी तक? सर हम लोग अभी इस समय 17 to 18% वो top line. Oh, that's your marketing. So वो saving हो गई तो सीधे EBITDA आ जाएगा. EBITDA तो आना ही है. वो तो mandatory है. लेकिन बात EBITDA आने के लिए नहीं है.
ये अलग फिलोसफी है. अच्छा, ये this is a philosophy DNA है. change. हाँ, क्योंकि मतलब हमें कस्टमर का लव जीतना है. मतलब we don't want to be pushy. Correct. We have, मतलब it has been a long time I have been running this. Yeah. And I've learned a lot. Huh. That we have done so many mistakes here that that we keep on pushing everything on customers somewhere, and we don't try to understand that what is the real pain point, and we need to immediately change that within the system so that we become मतलब zero dependent company. Makes sense. Very interesting. Let's get to rapid fire round. This is an interesting session with Shivi. Yeah, are you ready? I'm ready. What do you like in your poison? Beer, whiskey, wine, gin. What's your best? Beer. Beer? You're a beer guy? Yeah. Tu beer hai. Okay. What are you into? Books or podcasts? Books, little bit. More. Share a book that you recommend. The Act of War by Sun Tzu. Oh wow. I think strategy. Yeah. Have read other books as well, but this is one very nice and very to the point. There's not much fiction there. It's real world kind of things. So you are a love marriage or an arranged marriage? Love marriage, sir. Love marriage. How many years? You know, sir, बहुत लंबा है. मतलब marriage से पहले I think 7-8 years. Wow. Yeah. So childhood. Not childhood. Yeah, I'm not a child. Not childhood, but during my engineering days. Oh, nice. Yeah, we were together and have been crazy journey. Difficult journey as well as sweet, obviously. So long time. Yeah. So now, we are 10 years married. Wow. So in entirety. Yeah. 10 plus 8 plus 6 plus 16. Yeah. Okay. And how many girlfriends before that? 0. First and last. No, seriously, I'm not joking. Otherwise, I would have told. There's nothing to shy away from. But एक बात बताओ, तुम दुबई इतना क्यों जाते हो? नहीं, दुबई तो मैं because of the investment, not because of the girls. Come on. This was just for fun because I anyways wanted to ask. Whenever I call you, I'm in Dubai. So let's party. But you're invested. Let's party. Let's party. Yeah. What is your punchline in office? मतलब क्या सबसे ज्यादा बोलते हो? क्या सबसे ज्यादा बोलता हूँ कि आज हम रात को 8 बजे नहीं जाएंगे घर और कोई वर्किंग आवर्स नहीं है इस कंपनी में. आप सुबह लेट क्यों थे? आपको तो जल्दी आना चाहिए था 1 घंटा. आज हमें ये मीटिंग करनी है, आज हमें ये डिसीजन लेने हैं, कल सुबह ये इम्प्लीमेंट करना है. यही मेरी पंचलाइन रहती है 99%. So I'm trying to tell my team that there's no working hours in our company. Yeah. It's your company. It's not my company. It's your company. Right. Which is your favorite holiday destination? मैं ज्यादा हॉलिडे वाला बंदा नहीं हूँ. फिर भी कोई अच्छी जगह बता दो, हम चले जाएंगे. I think Andaman. There you go. अच्छा, very nice. मतलब long back. Not recently. What's your thing for work-life balance? कुछ करते हो या मतलब? Started working out. Okay. After looking at 45 days challenge by Akash. Arre, thank you. Just started. Not much, I would say. I just keep trying to listen to music somewhere, sometime. Or listening to podcast, obviously. Have been listening to multiple founders. Nice. I'm really on the record. I'm telling you that I'm really fond of Piyush from Lenskart. Nice. What he has done is phenomenal. Correct. Very, very respectful. Yeah. So I'm listening to his podcast now. Oh wow. He also has a podcast now. He's doing few sessions with Bloom and others. Okay. And trying to gain insights from that, how he's looking at the bigger picture. Sure. Nice. Maybe we can be part of that big story somewhere. Right. And have been listening to Ritesh. Have been listening to recent Vijay. Yeah. और उन्होंने बोला कि कैशबैक बंद कर दो इमीडिएटली. और उन्होंने शुरू किया था कैशबैक. I know. तो वो बड़ा आई ओपनिंग था. Correct. तो मैंने सारी टीम को बोला कि इमीडिएटली सुनो, सब लोग छोड़ करके काम. और कैशबैक बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल. नो कैशबैक्स, नो डिस्काउंट्स. Wow. Okay, so जो and no marketing. No marketing. And how public markets are transforming. And public versus private debate. Correct. Market debate. So I think that is there. Nice. Time spent करते हैं सर. Lovely. ये हमारा stress buster है. Nice. Absolutely. This is what we learn from, right? From all these OGs. Hard work or luck? What's your take? Hard work. Yeah. Hard work. There's no luck. There's obviously luck, obviously in everyone's life. But I believe without hard work, the luck cannot give you any wings. Yeah.
So like maybe Red Bull gives wings, Hmm. but luck doesn't give wings. Yeah. Hard work It is is a possible. train. So there are two tracks of Yeah. life. Correct. One is hard work, one is hard. वेरी नाइस. एक बार बताओ, स्टार्टअप की दुनिया में अभी 5-6 साल से तुम कर रहे हो, कोई ऐसा हार्ड ट्रूथ दैट यू वांट टू शेयर व्हिच इज अ लिटिल ग्लेयरिंग, या फिर कुछ हार्ट रेंचिंग, या फिर मतलब कुछ? I think it is very difficult. ओके. So I want to be very candid. हाँ. Don't want to be very fancy. Very difficult only for the strong-hearted. Money making area नहीं है. पहली चीज. तो फाउंडर्स अगर ये सोचते हैं कि दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मिलियनेयर, नो इट इज नॉट. राइट. Ecosystem is mature, getting mature. You have to do real work to get that real transformation. Very very difficult journey, long journey, 10 साल minimum. Correct. Mind leap. So it is more of a mind game rather than a body game. So I'm mentally prepared होने चाहिए. We are here. We are trying to do something. And try to do for the country, try to do for a bigger cause, and you will be successful in my. So that is kind of a hard truth. And मेरे हिसाब से funding का concept हटाना चाहिए. I am towards funding and I want funding. मैं ये कहना चाहूँगा, but I think from an entrepreneur perspective, and I've started making my money. They should not build their business for funding. They should not. They should not. Correct. And I think bootstrapped is the way. Is the better way. And funding will come eventually. ऐसा नहीं है कि funding नहीं आएगा. बहुत businesses में, profitable businesses में funds are like ready to pour money. True. But then I think you have you understand the value of money. You Correct. When you don't have funds, पैसे नहीं है, that's when you create a better business. That is true. I agree. आज आपके पैसे नहीं है और आपके खर्चे हैं. Now how do you mitigate that? Very difficult situations. True. But I think that is where we learn and we build. Absolutely. No, that's a good learning towards the end. Yes, Thank you so much. On that note, we will wrap this amazing podcast. Thank you so much, Shivi, once again for coming over and share your amazing journey.